So there are four methods of diagnosis. First, first is the observation. Second is inquiring. Third is the palpation. And fourth is the auscultation. And one more, along with auscultation, we did olfactory. What is this olfactory? Is the smelling, right? So these are the parts of diagnosis. So when a patient comes to you, you have to start with the observation. So observation itself include a lot of things. It's not like कि हम सिर्फ दो चार चीजें, observation में काफी चीजें include होती हैं. Observation में you look for the face, you look for the movements, you look for the any kind of eruptions on the body, you look for the tongue. That also comes under the observation. Okay, you hear the voice, so that also comes under the observation. All these kind of things will give you two things. Okay, one is the general diagnosis and second is the specific diagnosis. One is the general diagnosis and one is the specific diagnosis. So what is the difference between general diagnosis and the specific diagnosis? So in general diagnosis, we look for all the common things which we inquire. Okay, like name. First is the observation. We have seen the observation. We come under a picture that patient is having Qi deficiency or Qi or blood deficiency or Qi stagnation, blood stagnation. That all come under the observation. आप देखते ही समझ सकते हैं कि पेशेंट को ये हो सकता है, but it cannot be the final diagnosis. It's your observation that patient is having this kind of problem. Okay, so in general we find by inquiring, by observation, that patient is having a problem related to either Qi or blood. Third thing is the yang, yin, dampness, and six is your flame. Okay, for example, how you can find out the even the five elements, in which element the personality of a person belongs also come under the observation. Okay, this will take a time, that will take a little practice, but even you can judge the person is of what element. Okay, so that's come under the advanced part. आप देख के कैसे पता चल सकता है कि वो बंदा कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है? तो उसके लिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी लुक फॉर द फेस, वी लुक फॉर द बॉडी स्ट्रक्चर. We look for the face and the body structure. These two things also give you an idea the person belongs to which element. Okay, so all those observation inquiring will give you a list of differential diagnosis of two kinds. Okay,
So first, all these observation and your inquiring and all those things will give you a general idea. Okay, observation will give you a general idea, and then inquiring and the palpation will confirm your differential diagnosis. Okay, understood? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Are you getting or not? So Yes. for this class, we already have to know the basics of QI, yin, yang, dampness, film, and everything. Yeah, you should know about what is chi, what is blood, what is yang, what is yin, what is dampness, and what is phlegm. ठीक है? जब हम खाना बनाते हैं तो हमको पता होना चाहिए मिर्ची क्या है, हल्दी क्या है, धनिया क्या है, नमक क्या है. ओके, जब वही पता नहीं है तो हम टेस्ट को कैसा समझ पाएंगे, राइट? No, जब I तक was I'm totally new to this subject, so okay, so you that's have why to I go for the asked. basics. You have to go for the basics. Okay, so today's Yeah. lecture for basically for the people who have done who have passed out the basics and they want to know something more about the advanced. Okay. Okay. So let it be how much you get it. It's okay. There is nothing like that. कि ये सब चीजें आपकी miss out हो जाएंगी. You'll get it. Okay. In further. So other than what's your name, ma'am? Megha. Mega. Okay. Other than Mega, all the other people are aware of all these 6 things: chi, blood, yang, yin, dampness, and phlegm. So will I be learning all these 6 things, or I should learn before I attend the sessions in January? Okay, you will learn in the next lectures or the coming lectures, upcoming lectures. You'll get all those things. Okay. Yeah. Okay. Because when I enrolled, I was very clear that I don't know anything about it. No The worries. basics is also. No worries. No worries. Okay. Okay, sir. Then other than Mega, no one is answering. So is there anything wrong or I'm expecting more from you? Wow, some new classes. असं आहे काय म्हणतोस काय? अरे मूर्खा, सावरकरांनी पहिले अस्पृश्यता निर्मूलनाचं काम सुरू केलं, सगळ्यांना जवळ बसवून जेवायला वाढलं. काय सांगतो सर ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? Very good. Enjoyed everyone? So I can see 18 people over here, out of which one Mega is answering, and remaining 17 people. आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है. तो एटलीस्ट एक जवाब दो. I'm asking since last 5 minutes. Yes. Zara Khan, Arvinda Mukherjee, Dr. Ayas, Dr. Wasim. Sir. All of you have done this course. All of you have done this course. इसके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि ये अभी इसके अंदर क्या है कि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं कि जो अभी एक्यूपंक्चर बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, उनको भी मैंने इनवाइट किया हुआ है. और ये आज की जो स्पेशल क्लास है वो डायग्नोसिस, यानी कि जो चीज आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंटेंसिव कोर्स आप लोगों ने जो 200 आवर्स का कंप्लीट किया, उसके बाद आगे आप कैसे इसको प्रैक्टिस में लेंगे. पेशेंट जब आपके पास आता है, पेशेंट आता है क्या, आपके पास जितने भी एक्यूपंक्चरिस्ट, हिजामा प्रैक्टिशनर है, वो फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपके पास पेशेंट क्या आता है, पेन से ही पेशेंट आता है. ये जितनी बातें हो रही है सिर्फ पेन पे ही बात हो रही, किसी अदर डिजीज पे बात नहीं हो रही है. राइट? यस सर. तो यहां पर आपको ये देखना है कि बॉडी के अंदर क्या चीजें हैं. बॉडी के अंदर वो पेशेंट को जो प्रॉब्लम है 1 to 6 ये जो लिखा गया है, ची, ब्लड, यांग, यिन, डैमनेस और फ्लेगम, ये है क्या? उसके अंदर बॉडी के अंदर ची की डिफिशियंसी है, बॉडी के अंदर ब्लड की डिफिशियंसी है, या ची की स्टैग्नेशन है, या ब्लड की स्टैग्नेशन है, या यांग डिफिशियंस है, या यिन डिफिशियंस है. तो यिन और यांग में भी डिफिशियंसी के अंदर भी बहुत सारे लॉज हैं, क्योंकि अगर यांग एक्सेस है लेकिन यिन अगर डिफिशियंस नहीं हुआ
फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप हाइपर हो गए, राइट? किसी ने कुछ बोल दिया, आप हाइपर हो गए, आपकी यांग बढ़ गई, लेकिन उस वक्त कोई यिन डिफिशियंस नहीं हुई है, उस वक्त यिन डिफिशियंस नहीं हुई। हाँ, कोलैप्स हो गई बॉडी किसी भी वजह से, यांग, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया कि वह ऐसा है, और वो सामने वाले ने इतना टेंशन लिया और वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो यहां पे दो चीजें हैं कि यिन की डिफिशियंसी का रूट कॉज क्या होता है, यांग जब एक्सेस होती है या यांग जब डिफिशियंस होती है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स आता है, टंग में क्या दिखता है, पल्स में क्या दिखता है, फेस पे क्या दिखता है, पेशेंट की केस हिस्ट्री में क्या दिखती है। ये आपको बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। आज का एक केस था, मैं अभी अगर वो केस आप लोग के सामने मैं अगर लाता तो बहुत मजा आती है। तो ये जो चीज है अभी, ये जो बताया जा रहा है आपको कि ये चीज आपको डायग्नोज करना है, ये अगर आप डायग्नोज नहीं करेंगे तो आप कैसे समझेंगे, आगे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो अगर इसमें हमारे कुछ साथी जो बिल्कुल नए हैं, तो अपकमिंग के अंदर जो है वो आपको बेसिक से सिखाया जाएगा कि व्हाट इज द ची क्या होती है, ब्लड क्या होता है, यिन क्या होता है, यांग क्या होता है, डैमनेस क्या होती है, फ्लेगम क्या होता है। लेकिन जो लोग 200 आवर्स का कोर्स कंप्लीट किया, जिन्होंने 50 आवर्स प्रैक्टिकल, 7 डेज प्रैक्टिकल करके गए, अब आगे आपको ये डायग्नोसिस के लिए आपके लिए स्पेशल क्लास को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि आप बेहतर प्रैक्टिस करें। आप RSF एक्यूपंक्चर कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, तो आप कहीं पे भी जाओ ना तो आपके साथ एक टैग लगा हुआ RSM का, वो खराब नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। हम लोगों ऐसा नहीं क्या, हम लोगों के पास काम नहीं तो बैठ के ऐसे क्लास ले रहे हैं। आपको कैसे स्ट्रांग बनाना, आगे चल के आप लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे होता है ना, बच्चा होता है क्लास 10 में होता है, फिर वो 12th करता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टरी करता है, तो उसी तरह भी आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया एक्यूपंक्चर को। तो ये जो चीज है डायग्नोसिस, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको बगैर समझे हुए आप जितने भी निर्णय डाल देंगे, पेशेंट को क्या है, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, परमानेंट क्योर की तरफ पेशेंट कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? तो जो हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं जिनको चीप ब्लड बॉडी फ्लूइड नहीं है, तो आपको बुक्स भेजी गई, तो आप इसको गो थ्रू कीजिए कि व्हाट इज द ची, व्हाट इज द ब्लड, व्हाट इज द बॉडी फ्लूइड, व्हाट इज द यिन, व्हाट इज द यांग। ये 5 एलिमेंट, ये क्या है, 5, ये एक्यूपंक्चर बेस्ड चीज पे है, 5 एलिमेंट्स के ऊपर है। 5 एलिमेंट्स, ऑल ऑफ यू नो, एवरीवन इज नो, यस सर, एवरीवन। कोई ऐसा है मेरा साथी जो वो 5 एलिमेंट्स को नहीं जानता है? चलिए मैं बेसिक आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, कोई ऐसा साथी है जो 5 एलिमेंट्स को नहीं जानता है? यस, एनीवन? I have no idea. या मेघा? Sir, मैं totally new हूँ. If it is, then I will not take this class. I may join I'm different not class. I'm not talking about the acupuncture. 5 एलिमेंट है क्या? 5 एलिमेंट वो चीजें हैं जो दुनिया में भी है, वो हमारी बॉडी में, जैसे विंड है, हीट है, अच्छा, that is वो पंचकर्मा या बेसिक पच पच Okay, basic, पच written. पच महाभूत. पच महाभूत इसे बोलते हैं, कर्मा नहीं बोलते। जी, पंचकर्मा एक अलग चीज हो गई, नहीं पंचकर्मा पंच महाभूत सर. हाँ, पंच महाभूत, हाँ है, अच्छा. क्षितिज, पावन, गगन, समीरा, ये 5 चीजें जो हैं, तो ये बेस है आपकी है, ये सभी जानते हैं इसके ऊपर। Yes sir. ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी आई थिंक आप लोग ये चीज समझ गए कि मोटिव क्या है क्लास का ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट? ओके। एक मिनट सर। अरे यार, excuse me everyone, mute yourself यार। Okay,
So we are talking about the observation. So through observation, you will get the various things of the general diagnosis. Okay, about the 5 elements, the person belongs to which element, कौन से element से belong करता है. Okay, और काफी वेरियस थिंग्स है जो आपको पता चल सकती है फ्रॉम जनरल डायग्नोसिस. ओके, एंड वन इज द स्पेसिफिक डायग्नोसिस, जो आप पर्टिकुलर उसकी चीफ कंप्लेंट को लेके ही करते हैं, राइट. सो जनरल डायग्नोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पेसिफिक डायग्नोसिस. जब जनरल डायग्नोसिस आपका क्लियर है तो स्पेसिफिक डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में वो बहुत ही हेल्प करता है. ओके, so what you get from the general diagnosis and what you will get from the specific diagnosis. So from general diagnosis you get the cause of the problem, cause of disease, and from specific diagnosis you get the pathology of the disease, or you can say the disease belongs to which pattern, or you can say disharmony in meridian or organ. Clear? Yes. So all these things you can get it from the specific diagnosis and the general diagnosis. So when we go talk about the observation, when patient comes to you, you can clearly see various things like the face, okay, and some part of the skin and some part of the skin, then movements, postures, कैसे बात करता है, behavior, all those things will give you the various ideas about the cause of the disease. Okay, and today we'll see one case, or we'll see one topic in which we'll see how we can do observation, how we can do inquiring, how we can do the palpation, and how we can do auscultation. Auscultation is not that commonly used, but the olfactory, right? So shall we begin? So you guys are ready or not? Yes, sir. मुझे नहीं लगा यार आप लोग रियली सर. कुछ सीखना है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. Yes. Today's topic is the backache, lower back ache. So I'll draw a 3 diagrams over here. You tell me the lower back. Okay. So out of these 3, which area is called the lower back? Lumbar, sacral, L2, L3, L4, L5, and this one. So I'm asking, you can see the screen?
Yes, sir. So I have drawn 3 areas. Third one, sir. Thoracic parts. Thoracic one, one. sir. Third one. मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे 3 एरिया ड्रॉ किए हैं, तीनों को मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं. So which area according to you is the lower back? Third one. Sir. Third one, sir. Yes, third. So this is the area which is the lower back. Right? And what all organs and the bones are present in this area? Lumbar, L, and One by one. ओके अभी सब जवाब दे रहे थे, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है. वन बाय वन बताइए. Sir, kidney Organs है. like kidney, sir. Okay, organs is the kidney. Then Genital organ. urinary bladder, okay. Then Bones are sacrum. okay. I mean vertebrae sacrum. Which vertebra? lumbar vertebra, and female है तो reproductive organs. One more thing I can in bone you had a lot of things over here. There is a cocaine. Sec, Then okay. then pelvic bone. ये भी यहीं पे रहता है ना pelvic bone. Yes. Yes, sir. Then femur joints भी है. femur भी है. okay. femur का And कुछ femur का head है. head of femur. So you had a lot of things to find out in lower back ache, right? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर बैक एक में अगर कोई पेन आ रहा है, पेशेंट आया लोअर बैक एक हो रहा है तो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपने दे दिए उसको रिलीफ मिल गया. नहीं, उससे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा. सो ट्रीटमेंट के लिए आपको डायग्नोसिस करना है और डायग्नोसिस के लिए मैंने आपका एरिया बता दिया. ये इतना एरिया आपके पास अवेलेबल है फॉर द डायग्नोसिस. ओके, दिस इज द स्पेसिफिक पार्ट. ठीक है, इससे स्पेसिफिक पता चलेगा. जनरल में क्या आएगा? जनरल में भी आपको तो फाइंड आउट करना है कि पर्सन कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है. देन व्हाट इज द condition, current condition, patient is having a deficient condition or excess condition, patient is having heat or cold, patient is having the chi problem or the blood problem. All those things are also need to be inquired, right? तो आपको जनरल एलिमेंट्स भी पता होने चाहिए और स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं, which is called as a treatment. Okay, which is called as a treatment. Fine. Okay, let it be. So let's move to the काम कर रहा है. Okay. Okay, so before moving to the next thing, let's start with the various causes and pathology which creates the lower back ache according to TCM. Okay, we are strictly dealing with the TCM, and we of course
correlate this all these problems with the modern medicine. But first we understand what is, according to TCM, are the etiologies which is creating the pain in the lower back, right? So the etiologies which affect are the excessive physical work, excessive sexual activity, pregnancy and the childbirth, invasion of the external cold and dampness, overwork, and the inadequate exercise. These are the causes according to TCM which is creating problem in the lower back, right? So so excessive physical work, what do you mean by the excessive physical work? Continue sitting. That is the we can that comes under the overwork, continuous sitting. So the physical work is like कि जो लोग मजदूर हैं, जो continuous वजन उठाते हैं, जो continuous वजन उठाते हैं, जिसका काम वैसा है जैसे कि फील्ड में घूमना, द मार्केटिंग पीपल, एक्सेस फिजिकल वर्क, कंटिन्यूस चलना, ओके. अदर देन दैट what all comes, female related works, that continuous झाड़ू पोछा अगर करते हैं तो, right? Then the person who are driving continuously with the movements, utarna baithna chalna, like this, so that comes under the physical works, okay. Okay. Now the pathologies which are affecting the lower back is the retention of the cold dampness, stagnation of chi and blood, kidney deficiency and liver stagnation. So specifically kidney का जो घर है is the lower back, okay. So directly or indirectly kidney will be involved in the any kind of pathologies of the lower back, okay, directly or indirectly. So Yes, sir. we have seen the etiologies, we have seen the pathologies, okay. So if you want to note this down, that will come in the future, so I can say the coming slides, कि हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो मैं आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने स्लाइड्स डाली है. सो इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन क्विकली, or want to take the screenshot or whatever, you just do quickly. ये आगे कोरिलेट होंगी. Done? Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write down the pathologies. Done? Yes, sir. Okay. So Yes, we sir. have four parts of the diagnosis. So observation, interrogation, palpation, and the pulse. So that will come under the palpation itself. Okay. So we'll learn the lower backache with this four method of diagnosis. How you can use all these four parts of diagnosis. So if you want to understand the four parts of diagnosis, it has a huge spectrum of questioning and interrogation and the observation. Okay. So all those things will come under the advanced level, but for example point of view, you need to understand how we use all those four things together and do the diagnosis. Okay.
ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है? Okay, fine. Then what we do in the diagnosis, we find out the pattern. So what all patterns are involved in the lower backache? So please write this down also. Okay, one notification for you guys. 1 minute के बाद I think the session will get time out. Please rejoin with the same ID password. Done with the identification of the pattern. लिख लिया आप लोगों ने pattern? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So etiology में first is excessive physical work. Excessive physical work, in particular regularly lifting objects, strain the muscles of the lower back and the kidneys. So muscles of the kidneys are also involved in the lower back ache, right? Excessive lifting therefore weakness the back in two ways. In a purely physical way, it strains the muscles of the lower back, and in an energetic way, it weakens the kidney chi also. So excessive जो वर्क है आपका फिजिकल वर्क